Hello students, I hope you all are well. Welcome back in AVS class. In previous videos, we have discussed about the earth and the sky and हमने जाना कि we all live on the earth और अर्थ पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसे हम लैंडफॉर्म कहते हैं. We have discussed about the different landform of the earth like plain, hill, mountain and desert. And also we have discussed about sources of water. And we know that there are sun, stars and moon in the sky. It's time for exercise. Are you ready? Okay. Your first question is complete the table using the words given in the box. Kids, इस क्वेश्चन में आपको टेबल के ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीजें लैंड पर मिलती है और कौन सी सी में. ओके, आर यू रेडी? एंड द वर्ड्स आर हिल्स, फिशिंग, स्विमिंग, buses and cars, ships, plants, animals, houses, desert, boats, fish, planes. तो किड्स आपको इन वर्ड्स में से आइडेंटिफाई करना है which is found on the land and which is found in the sea. So kids, hills, houses, buses and cars, plane, desert, plants and animals. ये चीजें लैंड पर मिलती है और किड्स हमें सी में क्या मिलता है? फिशिंग, बोट्स, फिश, स्विमिंग, शिप्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन द सी. एंड प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो लैंड और सी दोनों जगह में पाए जाते हैं. दोनों प्लेसेस के एनिमल एंड प्लांट्स अलग अलग होते हैं. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द क्वेश्चन. यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसका आपको आंसर देना. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द सन लुक लाइक. सो किड्स हमें सन कैसा दिखाई देता है? यस, द सन लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वैली. किड्स वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द वैली ना, कि वैली is a lowland between the hills or mountains. Valley mountains और hills के बीच का lowland होता है. Your next question is does the moon always appear round? क्या moon daily एक ही shape में appear होता है? नहीं ना, हमें moon daily different shape में दिखाई देता है. So your answer is no. Moon changes its size daily. Your next question is write any two uses of land. तो किड्स हमने land के about सब कुछ पढ़ लिया है ना. Can you tell me what is the two uses of land? Yes, we live on land. Second one is we grow crops on land. Your next question is read the sentences and pick the actions that we should do and cross the ones that we should not do. So kids, यहाँ पे आपको कुछ sentences दिए गए हैं. तो आपको जो sentence हमें करने चाहिए उसे टिक करना है and the sentence that we should not do हमें उसे cross करना है. Okay? The first question is use water with care. क्या मैं वाटर केयरफुली यूज करना चाहिए? Of course, this is correct sentence. We should use water carefully. And the second sentence is do not plant trees. क्या हमें trees को plant नहीं करना चाहिए? No, this is wrong. We should plant trees. The next sentence is throw waste in the open. क्या हमें
वेस्ट गार्बेज को ओपनली ऐसे फेंक देना चाहिए? नो, वी शुड थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन. योर नेक्स्ट सेंटेंस इज बर्न अ लॉट्स ऑफ क्रैकर्स. क्या हमें ढेर सारे क्रैकर्स को जलाना चाहिए? नो, वी शुड नॉट बर्न द क्रैकर्स. योर नेक्स्ट सेंटेंस इज क्लोज द वाटर टैप आफ्टर यूज. किड्स, क्या हमें वाटर टैप को यूज करने के बाद बंद कर देना चाहिए? यस, वी शुड क्लोज द टैप आफ्टर यूजिंग इट, जिससे वाटर वेस्ट होने से बच जाएगा. ओके, योर नेक्स्ट सेंटेंस इज डू नॉट वेस्ट फूड. किड्स, क्या हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए? यस, we should not waste food. Your next question is pick the odd one. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन टू सेम है, कौन सा एक डिफरेंट है. ओके, कम ऑन द फर्स्ट लाइन. बोट, शिप, ट्रेन. इट्स इन तीनों में से कौन सा दो सेम है? यस, बोट एंड शिप ये दोनों सेम है. But train is the odd one because it runs on the land. So, pick the train. Come on the next line. Sun, hills, stars. So kids, इसमें दो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो सेम है और कौन सा एक ऑड है? Sun and stars. ये दोनों सेम है क्योंकि sun और stars ये दोनों हमें स्काई में मिलते हैं. बट हिल इज द ऑड वन बिकॉज ये लैंड पर पाया जाता है. सो करेक्ट आंसर इज हिल्स. कम ऑन द नेक्स्ट लाइन. एंड द वर्ड्स आर डिजर्ट, सी, वैली. अब आप मुझे बताओ कि इन तीनों में से ऑड कौन सा है? डिजर्ट एंड वैली आर द सेम बिकॉज both are located on the land and these are the forms of lands, but C is the different. Your correct answer is C. So kids, now we end this video here and we'll meet in next video. Till then, take care. Bye bye.